First Ball 2020. Heavy rains poured cold water on the hopes of the cricket fans looking for live action in the first T20I. A cloud of uncertainty hovers over the second T20I too with rain forecast. Hello and welcome to the First Ball 2020 show. I'm Megha and join me in studio are Jaya Sharma, former Indian cricketer, and Rakesh Rao, senior sports journalist. Jaya, ये जो प्लेयर्स हैं जो भारत के लिए अभी गए हैं, इतने मौके उन्हें नहीं मिलते, डेस्परेट हैं अपना मेडल प्रूव करने के लिए, लेकिन मौका ही नहीं आ रहा. जी बिल्कुल. ये हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा था कि रेन प्लेड अ स्पॉइल स्पोर्ट एंड बड़ा मुश्किल होता है ऐसे जब आपको ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं और आपको चांस चाहिए होता है, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, तो बड़ा डिसहार्टनिंग हो जाता है प्लेयर्स के लिए. राकेश, बहुत सारे ऑफ कोर्स यहाँ से क्योंकि भारतीय टीम सेमीफाइनल्स में एग्जिट कर गई थी विश्व कप में, तो बहुत सारे स्लॉट्स हैं जहाँ पे लगातार चर्चा चल रही है कि यहाँ पे जगह बन सकती है. अभी जो डिस्कशन ऑब्वियसली रहेगा वो युवा प्लेयर्स पे रहेगा. आपकी किन पर निगाहें रहेंगी? मेरा सबसे पहले तो ये जो टाइमिंग है इसका सीरीज़ का, मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूँ. क्योंकि एक वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद 5 दिन के अंदर अगर आप एक सीरीज़ शुरू करते हैं, वो भी T20 की, अगर ODI होता है जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल रहे हैं तो भी बात समझ में आती है. इस T20 में किसको इंटरेस्ट है और आप ये जो परफॉर्मेंसेस हैं ये कब काउंट होंगे, इसको कोई याद नहीं रखेगा. क्योंकि आपका जो मेन फोकस था वो था वर्ल्ड कप. आपने इसको पिछले वर्ल्ड कप से 1 साल 1 नवंबर से लेकर 2 नवंबर तक आपने पूरा फोकस T20 पे किया. वो ख़त्म होने के बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि ये सीरीज़ में हमको कुछ ऐसा दिखने वाला है जो पहले नहीं दिखा, कम से कम मुझे ये बात समझ में नहीं आती है. और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो मौके मिलने की बात है, ऑफ कोर्स हमको कभी ना कभी ट्राई करना है, लेकिन आप ये जो एकदम से जब आप अपने क्रीमी लेयर को रेस्ट करते हैं, मान लीजिए कि अगर मैं एक न्यूजीलैंड का फ़ैन हूँ और मेरे पास एक इंडिया की टीम ऐसे आती है जिसमें कि विराट नहीं है, रोहित नहीं है, राहुल नहीं है, बुमराह नहीं है, कोई भी, मतलब उनके जो टॉप बॉलर्स ही नहीं हैं, आपके टॉप बैट्समैन नहीं हैं, आई फील चीटेड कि यार मैं पैसे दे के मुझे ये मैच देखना है, मगर ये टीमें कोई और आई हुई है. तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कि कमर्शियल कंसिडरेशन के अगेंस्ट जब हम देखते हैं तो ये चीज़ बहुत हल्की लगती है मुझे ये. लेकिन हाँ, इसमें जब मैचेस होंगे, जैसे अभी टॉस होने वाला है, तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से मौका जिनको मिलेगा वो अपनी तरफ से, तो उनको हो सकता है कि दोबारा मौका इतनी जल्दी ना मिले, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज इंपॉर्टेंट है. जी, और इस बीच टॉस होने वाला है, तो चलिए सीधे चलते हैं टॉस पे. He's gone for Wellingtonian, very strange. ICC match referee is Jeff Crow, who was soundly beaten at golf this morning. Right, let's do it. It's called Tails New Zealand. Right, Kane, you won the toss, and I think I heard you say you'll have a bowl. Is that because there's a bit of juice in the surface, or is it more the weather conditions? Yeah, a little bit of both. Obviously undercovers for a large part of today, and still potentially some weather around, so we'll try and make use of it first up. You don't have Trent Boult for this game, so an opportunity for a fast bowler to come into the side who hasn't been playing regularly. Who's that? Yeah, so Adam Milne comes in, so great opportunity for him. Other than that, we're unchanged from our last one. See, unchanged, but we might see it maybe a little bit more experimentation than we saw during the T20 World Cup? Yeah, we might see a little bit. I think whenever we play, we want to adjust to the conditions and play accordingly to our style of play as well as we can. So, yeah, I mean, a few unknowns coming back home, obviously, and getting back into a bilateral series, but at the same time, the guys are looking forward to it. When India come to town, there's always a bit of razzmatazz around it. It just feels a little bit different. You up for this? It's always fun, isn't it, against India? Yeah, it's always a great occasion when you get to play against India, and obviously they bring plenty of support with them. So I think a sellout today, so that should be nice. All the best. Right, Hardit. Well, we've got to start. That's one thing. Congratulations, skippering this Indian side. And you must have a team, because you've got some new players coming in. They must be really pumped and ready to go. Absolutely. First of all, to get a game, knowing the rain around and just playing a proper 20-over game is very exciting. And obviously, a lot of new guys, very excited, looking forward for the opportunities. You're going to have to bat first, and there is a chance of maybe, let's hope it doesn't come, maybe some showers. Does that make the pace that you would look to go out early on in the game a little bit difficult to judge?
I mean, we still need to assess the conditions and see how the wicket is behaving. Yes, there's no point of if the wicket does not help you and you try playing shots and kind of lose wickets in, then it does not rain. So you might be in a difficult position. So yes, we'll assess the situation, and obviously, by the time the rain comes, or if it's supposed to come, we'll kind of reassess and see where we want to go ahead. India comes to New Zealand, you look at the surface, there's a little bit of grass, there's a bit of green about it, and days gone by, Indian batsmen might worry about that. I don't think that's really the case any longer, is it? No, I mean, now I don't think in international cricket, if you come, and I don't think pace or bounce makes a difference now. Obviously, it's challenging, it tests you, but I think if you play international level, you have the skill set and you have the mindset to kind of cope up with the challenges come. So, yeah, I think it does not make any difference now. All right, nice to see you and all the best. Thank you. So New Zealand न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इनफैक्ट ये जो मुकाबला है ये बे ओवल में खेला जा रहा है न्यूजीलैंड में, और इससे पहले यहाँ पे जो 9 T20Is खेले गए हैं उसमें 7 में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने जीत हासिल की है, जबकि 2 का कोई भी रिजल्ट नहीं रहा। ओवरकास्ट कंडीशंस हैं इन जनरल न्यूजीलैंड में, अर्ली ऑन तो स्विंग काफ़ी देखने को मिलता है। कैसा आपका असेसमेंट रहेगा? जी, मैंने भी न्यूजीलैंड में कई सीरीज़ खेली हैं, एंड द मेन फैक्टर हेयर इज़ द विंड वेलोसिटी। वो इतनी ज़्यादा होती है कि जब आप कभी बैक लिफ्ट भी उठाते हैं तो वो बैट भी स्वे करता है। तो आई थिंक अर्ली ऑन, क्योंकि पेस बैटरी अच्छी है, न्यूजीलैंड बॉलर्स बड़े एक्सपीरियंस हैं, एंड वो ट्राई करेंगे कि अपनी कंडीशंस, होम कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करें। और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो हमारे ओपनर्स हैं वो कैसा स्टैंड लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट 6 overs विल बी वेरी क्रूशियल. Interesting. And Rakesh, you were earlier talking about the historical context around this ground. Can you please throw some more light on that? Yeah, I mean, see, we are talking about a venue which is considered a holiday, a kind of a place where you go on holidays. Not exactly a holiday destination, but yes, people want to just go out there and have a break. You have, a lot of things happening around it. That means you can go out for trekking, mountain climbing and whatnot. But that apart, here we are for cricket. Yeah. So, of course, the fans over here would love to have a game. And of course, New Zealand has a fantastic track record here. Out of the 9 games, like you spoke about, they have a 7-2 record here. It's like they have won 7 times. Yeah. They have lost 1 to Pakistan, 1 to India. So obviously they do host a game here with any touring team in the last 3-4 years, which we've seen. So they start as firm favorites. And unlike the name Oval, this ground is pretty round. It's not oval like the one that we see at like for instance the Adelaide the surface there. That's completely different. Here it is round, and that is a rarity. Why am I underlining and emphasizing on this point is a lot of grounds in this country are actually rugby grounds converted into a cricket ground. So, drop-in, what they call it. No, drop-in is the surface. I'm talking about the whole ground. So the point here is that a lot of rugby surfaces that you see, or the ground that you see, the problem is that the boundary line is not circular. Much like that you see in a hockey ground or a football ground, you have as one straight line at the end of it. It's not circular. So here you will actually see that a lot of grounds in this country have a different kind of like the entire layout. But here it's different. So but then again, this is not a stadium, as you can see. It's a ground. That means wind plays a big role. Like the last game which didn't happen. Yeah. Of course, Wellington is known to be the windy Wellington. Always. Because, we all know that wind plays a huge role in that country. But here, since it's not a stadium, it makes matters even worse. Interesting. You talked about New Zealand being the favorites. Now, let's head to my favorite part of the show, wherein we invite the callers. अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 011-2342-1084 और इसके अलावा आप 2342-1085 पे भी डायल कर सकते हैं। और इसके साथ ही पहले कॉलर आज के हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार। हाँ जी मैडम, नमस्कार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, मैं विकास पारिक बात कर रहा हूँ, हनुमानगढ़ राजस्थान से। जी विकास, क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मेरा सवाल है एक, पहला तो ये सवाल है कि जो आज ऋषभ पंत को है वो खिलाया जा रहा है, तो उसकी जगह मुझे लग रहा है कि कार्तिक ही सही है।
क्योंकि कार्तिक को पिछले काफी समय से हमने देखा है, अच्छा खेल लेते हैं, वो अंत में आते हैं और कुछ अच्छे है, वो शॉट भी लगाते हैं। और एक ये कहना चाहता हूँ कि आज संजू सैमसन अच्छा खेलेगा। जी, धन्यवाद आपकी टिप्पणी के लिए। और इसके साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार। हेलो जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। जी, मैं किरण नवगिरे बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र औरंगाबाद से। जी किरण, काफी दिलचस्प नाम है आपका, क्या सवाल है आपका? सवाल तो ये है कि आज इंडिया जीतेगा, लेकिन जो वर्ल्ड कप हम हारे हैं 10 जी। विकेट से हारे हैं सेमीफाइनल, जी। तो हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इतनी बुरी हार किसी को मंजूर नहीं होगी। जी बिल्कुल, काफी हार्ट ब्रोकन इंडियन फैंस है और वाजिब सी बात है। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार मैम, मैं अरुण कुमार अलवर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी अरुण। मैम मैं ये पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आकाशवाणी पे मैम कंटिन्यूअसली कमेंट्री आनी चाहिए, क्योंकि मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ और हम जैसे ब्लाइंड पर्सन देख नहीं सकते जी। और ये मैम रेडियो से ही कमेंट्री सुन के क्रिकेट का आनंद लेते हैं जी। तो मैम दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्या हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ओपनिंग नहीं कर सकते? जी धन्यवाद आपकी टिप्पणी के लिए। काफ़ी सारे सवाल आए। किरण नवगिरे का भी सवाल आया, जो कि ऑफकोर्स नेम से एक ऑफकोर्स भारतीय विमेंस क्रिकेट में भी एक किरण नवगिरे हैं, लेकिन ये वो किरण नवगिरे नहीं थे। बात करते हैं जो सवाल अभी लेटेस्ट आया है कि ओपनिंग के लिए, और दोनों सवाल इनफैक्ट कनेक्टेड भी हैं। ऋषभ पंत की भूमिका, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं कि क्या मिडिल ऑर्डर में अपना बेस्ट वो दे पा रहे हैं, T20I नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं, क्या बतौर ओपनर आप उन्हें देखती हैं? आई डोंट थिंक सो। आई मीन आपके पास ओपनिंग का स्लॉट अभी ओपन नहीं है। ईशान किशन और शुभमन गिल दोनों ही अच्छा करते आ रहे हैं, एंड मुझे लगता है कि ऋषभ पंत को थोड़ा सा टाइम चाहिए, एंड ही इज़ अ क्लासी प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट। उनको थोड़ा टाइम चाहिए। आई थिंक यहाँ पे जैसे अपॉर्चुनिटी मिली है वर्ल्ड कप में, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली दिनेश कार्तिक के होने से, तो आई थिंक आज जब उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यंग टैलेंट सामने आएगा, तो आई थिंक उनका भी होगा कि वो परफॉर्म करें, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। Rakesh, it's pretty baffling because we remember Rishabh Pant, his earliest impressions, 2016 Under-19 World Cup. He smashed a brilliant century in that game, and then again left his imprint in the IPL. But in the last couple of IPL as well, his strike rate has suffered, and in T20Is, he's not been able to give his best. Yeah, that is true. That is something, because I think he now takes a bit of time. If you see the way he has been planning his innings, with any time you see him play in, like red ball format, he's taking that time and he's giving you some great innings. But somehow he's not able to switch. Everybody knows that, of course, he can smash any attack, But the fact of the matter is that, there was one guy also who spoke about whether, DK should have been there or not. It's very strange that every time you see, Rishabh Pant being included in the team and the way he gets out and when he's returning, the first thought is, isse to DK better tha. And when DK doesn't give you what you expect of him, because his role is very different than what Rishabh's role absolutely. is. His job is to finish Super the game. specialized. When he doesn't do it, then you'll say, अरे इसको खिलाने से तो अच्छा तो हम लोग like ऋषभ को खिला लेते. The point is, both these guys have been, not very consistent. And if you were to compare the two, I think Dinesh was still more consistent than Rishabh. So Rishabh being, first of all, you have killed his confidence completely by keeping him out of the scheme of things, because the new team management, when it comes to white ball cricket, is not sure about whom they want, whom they don't want. If that were to be the case, if they were so sure, Dinesh Karthik would have played the semi-finals for sure. Yeah. He was kept out of it after being told that, we are grooming him for the role of a finisher. He has the experience, he has a very calm head, and so on and so forth, but he was not in your scheme of things. Having said that, when you say Rishabh can also open, then why do you have openers? I mean, you want to include Rishabh at any cost? That is, you're also considering spoiling someone else's, chance, because he is a specialist top order guy, be it Shubman Gill or, Ishan. If you're still trying to see, we Indians at one point in time, we say that we have a talent pool, we have 30 players, blah, blah stuff. Why do you want, when you have specialists to do the job, why do you want to promote somebody who is not in the role of an opener? You want to take him up. From 3 to 2 and 1, I can understand. Virat being asked to open,
that is still okay. But you can't pull out a guy from the middle order just because you want to include him. That means you're still not sure what you want. This is also a reflection on the kind of, the very indecisive nature of the team management. So there's a lot of questions to be asked. But with this team and whatever is at stake, I think this is the time for you to just go there and ask these guys to go and bat the way they do their best jobs, and then you take a call on it. हालांकि यहाँ पे मैं एक और पक्ष पे आपकी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जो सवाल उठा T20 विश्व कप के दौरान वो ये था कि जो ओपनर्स हैं वो पहली बॉल से बड़े शॉट्स नहीं लगा रहे. हम इंग्लैंड की टीम से कंपैरिजन कर रहे थे, जहाँ पे एक साइड एलेक्स हेल्स थे, दूसरी तरफ जॉस बटलर थे. हेल्स तो पर्टिकुलरली ही वुड हिट द ग्राउंड रनिंग. तो क्या वैसे किसी ओपनर की तलाश है भारत को? अगेन लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन का जिक्र हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऋषभ पंत ने डोमेस्टिक क्रिकेट में इनिशियली ओपन भी किया है. तो डू यू सी हिम एज एन ओपनिंग कैंडिडेट? I think you have a left-right combination with Ishan and Shubman. And after the World Cup debacle, I think BCCI is strongly looking into the matters. After sacking the selectors, now thinking of split coaching roles for different formats and split captaincy. So I think the matter has been taken very seriously in the board. And they want to build a T20 specialized team here. So I don't think so you should tinker with the batting order in so much way that your top order, you already have got openers, and opening is a specialist job. So I don't see Rishabh fitting in the opening slot. वापस उस पॉइंट पे आएंगे. फिर से कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं. पहले कॉलर जो अभी आए उनसे बात करते हैं. नमस्कार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, कोई बात नहीं, एक और कॉलर जो हमारे साथ जुड़ गए उनसे बात करते हैं. नमस्कार. नमस्कार जी मैम, सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल. आपका नाम क्या है? मैं सुखचैन सिंह बोल रहा हूँ जी, पटियाला से. जी सुखचैन जी, क्या सवाल है आपका? जी मैम, ये सवाल सीनियर से है कि ये जो टीम खेल रही है अभी, इसमें एक या दो सीनियर प्लेयर हैं जी, तो ये ऐसा जो टीम सिलेक्शन करके भेजा, क्या ये पूरा इंडिया को मजा दे पाएगी जो आम सीनियर प्लेयर्स जो देते हैं हम? जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए. हालांकि जब विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं आया तो सवालिया निशान सीनियर्स पर ही उठा था, लेकिन ये काफी दिलचस्प सवाल था राकेश. देखिए, मैंने अभी मेरे ख्याल से 1-2 मिनट पहले मैंने बिल्कुल यही कहा था कि देखिए, जब आप एक टीम को कहते हैं कि साहब अब हम आपको रेस्ट देंगे या उनको रेस्ट चाहिए, किस चीज़ का रेस्ट चाहिए आपको? आप ऑस्ट्रेलिया गए थे कम से कम आपके पहले मैच से आप कम से कम 17 दिन पहले. उसके बाद आपने वहाँ वार्म अप मैचेस खेले, आपको बहुत रेस्ट था वहाँ पे. टोटल वर्ल्ड कप कैंपेन में भी अगर आप देखें, रोज़ मैच नहीं खेलना है आपको. आपने सिर्फ 5 लीग मैच खेला और 1 सेमीफाइनल. टोटल मिला के 6 मैच, और वो भी इतना स्पेस्ड आउट. फिर आपको ही नहीं, आपका जो कोच है उसको भी रेस्ट चाहिए. तो मतलब ये जो पूरी थिंकिंग है बोर्ड की, वो दे आर शेकन, क्योंकि उनको वो ये मान के चले थे कि ये वर्ल्ड कप के हम फाइनल तक तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे. ये जो शॉक लगा है उनको, उसके बाद से ये सारा कि मतलब कटाई छटाई जो भी करते हैं टीम की, और ये जो आपने टीम भेजी है, अब आप कहते हैं हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये तो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं. बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फैंस, क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग आके मैच देखें, चाहे वो टीवी पे हो या क्योंकि ये आपका रेवेन्यू जनरेट करता है. अगर आप ये टीम खिलाएंगे, आप मुझे भी इंडिया में भी इफ यू कैन हैव अ सर्वे और बोलिए कि कितने लोग इस सीरीज में रियली इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए. आज संडे का दिन है, जरूर शायद लोग देखें भी, लेकिन ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वो नहीं है. ये जो कॉलर कह रहे हैं, सुखचैन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई कंप्लीटली एग्री विथ हिम कि वो इंटरेस्ट नहीं है. ये हमको एड्रेस करना पड़ेगा ये इशू, क्योंकि क्रिकेट इज नॉट जस्ट अबाउट रिजल्ट्स, इट इज अबाउट गिविंग क्वालिटी टू पीपल हु मेक दिस गेम हैपन. जी बिल्कुल. Is it a case of seniors being rested, or is it about the youngsters getting an opportunity because the next T20 World Cup is still 2 years away? I think it's a process that every team goes through. It's a transition, I would say, because as I said earlier, that BCCI is looking to build a T20 specialist team. अगर आप वहाँ पे बात करें सीनियर्स की, अगर आप रोहित को भी देखें, आप बैटिंग ले सकते हैं उनसे, बट फील्डिंग की जब बात आती है तब वो थोड़े से हल्के पड़ते दिखाई देते हैं. तो आई थिंक ये आपको फ्रेश लेग्स चाहिए एक नई टीम बनाने के लिए. और आई थिंक अब यहाँ से भारत
मेरे को लगता है कि तैयार है एक ट्रांजिशन फेज में जाने के लिए टू बिल्ड द टीम फॉर द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप. And in fact, constantly the English template is being cited, wherein they have different teams for different. Of course, there are players that play across the formats, but different teams for different formats. So, do you see that happening for India as well? No, we don't have to follow what England is doing just because they have, they've been successful. Yeah. What works for us is quite different. The way I look at it, we are going with specialist batsmen who can't bowl. Yeah. We are going with bowlers who can't bat. So in short, what we lack is all-rounders. In a country that has 39 first-class teams, we have a structure like no other in the world. You can't get 11 players to play a certain format as per the requirement of that particular, style of play. Whatever are the compulsions, can't we find 11 playing members? The answer is no. We don't have quality. We do get swayed by the performances in the IPL, then we go gaga over it. But look at the result. When Bumrah got injured, the entire think tank was thinking who will replace him. If you had such a good pool, you could have picked one of that. You picked Shami the last minute, and Shami was the same person who hadn't played the format for more than a year. So what are we talking about? So that means we are not clear. These issues have to be addressed pretty clearly. Having said this, we are going in for a time where we talk about shift in thinking, building a team for 2024. What India needs to do is let's have players who can bat a bit but bowl as they normally do. Bowl a bit also if they can bat very well. This is why we won the 83 World Cup. We won the 2011 World Cup, 2007 T20, because we had batsmen who could bowl. And also we'll reach a point where you will have even your number 8, 9, 10, 11 will be able to hit the ball long. Absolutely. And that's what, again, citing England's example, that's what they had talking about their batting order. Now, फिर से हमारे साथ जो कॉलर्स जुड़े हैं उनसे बात करते हैं. नमस्कार. नमस्कार मैडम. जी, स्वागत है आपका. मैं गणेश ठेंगे बात कर रहा हूँ. अभी मेरे दोस्त ने कॉल किया था, किरण ने, महाराष्ट्र. जी. अगर विश्व कप में युजवेंद्र चहल को खिलाया जाता तो बहुत अच्छा होता. जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए. एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं. नमस्कार. हेलो मैम, नमस्ते. जी, नमस्ते. जी, और आपके साथ एक्सपर्ट मैम है और सर हैं, उनको दोनों को मेरा नमस्ते. जी, नमस्कार. जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह मैंने देखा जब T20 वर्ल्ड कप हुआ, जिस तरह इंग्लैंड ने 14 छक्के की बारिश की और 10 विकेट से भारत हार गया, क्या आज भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल सकता है? क्योंकि मैंने पहला मैच नहीं सुन पाई थी, आज मैं सुन रही हूँ. तो कुछ सर इस पे राय दें. धन्यवाद. जी, और आपने अपना परिचय नहीं दिया, तो जल्दी से अपना नाम बता दीजिए. जी, मैं रिंकी बात कर रही हूँ, बलरामपुर से. जी रिंकी, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए. आज कैसा प्रदर्शन रहेगा भारत का, उसके बारे में ऑफ कोर्स आपकी प्रतिक्रिया लेंगे. लेकिन राकेश ने जो पॉइंट साइड किया कि ऑलराउंडर्स की ज़रूरत है भारत को, बट हाउ डू यू एड्रेस दैट? ऑफ कोर्स वी आर क्रिटिसाइजिंग द टीम मैनेजमेंट, द टीम, बट क्लियरली दे डू नॉट हैव ऑलराउंडर्स. नाउ हाउ डू यू गेट देम, हाउ डू यू एड्रेस दिस इशू? आई थिंक इट्स बेसिकली जब आप एक टीम बिल्ड करने को देखते हैं, और T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है पर्टिकुलरली, जैसा राकेश ने बोला कि यू नीड टू हैव ऑलराउंडर्स एंड और आपको क्वालिटी ऑलराउंडर्स चाहिए, जो कि बहुत कम देखने को मिल रहे हैं हमें. बट अगर आप देखें तो जो इकोसिस्टम है हमारे इंडिया का वो बहुत बड़ा है. तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई स्कैरसिटी ऑफ टैलेंट है. टैलेंट है हमारे पास, बट राइट अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाई वी हैव सीन the selection panel get set. So I think giving the opportunity to the right candidate is very mandatory. In fact, there was a question around Yuzvendra Chahal. Now, even in the World Cup, there was Ashwin, there was Akshar Patel, the two spinners who played throughout. Again, finger spinners. There was no wrist spinner who got a look in. But then, that was because they could bat as well. That could be the reason, yes. Because, that's what I said. If India needs 18 runs of 8 balls with 3 wickets in hand, are you sure that we are going to win from there? The answer is probably no. Because you don't expect your late order to even give you 15-20 runs. That is where we always have that danger that we need to finish the match with at least 6 down or 7 down. Anything else, then we will be in serious trouble. Now, having said that, again, the problem here is, Yuzvendra Chahal, we could have tried him at least at the MCG.
That is what I feel, Big because round, yeah. because we saw Adil, we saw a lot of other guys who Yeah, could make a wrist spinners difference. who were, yeah. Wrist spinners made an impact. We could have tried him at least. Yeah. Interesting then. Well then, thankfully, there'd be live cricketing action. Indian openers would be stepping out shortly. Thank you so much for sharing your assessment and thoughts with us. Thanks, It's over. Tanmega. Thank you. Yeah. It's over to our commentary team for live cricket. First ball 2020. इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चंद और वीके तोमर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो,